kabar saya Ramadhan menikmati Idul seperti kami berpertiga. Nama saya Rana Umair. Nama saya Harun. Nama saya Hamzah. आज एक कोई मकसद हाजिर हुआ यहाँ स्टूडियो बड़े लोग आएगा हारून Tedik Penia Rehan Kira Dubil Cut Bendria Pusaka dan Tex Proklamasi. Video credit by CNN Indonesia. लोअर ब्याह संगत करें जी दोस्तों मुझे वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करना शेयर करना और कमेंट्स करना इस चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो के आखिर में हम ऑप्शन पर लगा के आसान करेंगे उस वक्त हमारे साथ रहें लेट्स गेट स्टार्टेड Lapor kirap bendera merah putih. Kita lihat yang di warna kaos. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Silakan. Maju. Jalan. Keluar jalan. Jalan. Henti. Rock. 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 Great yaar, great. Rock. Wesam. Lapor pengambilan sang merah putih dan teks proklamasi. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Dua kali haluan kanan. Jalan. क्या हुआ Haluan kiri. Jalan. ये स्टाइल नहीं है Style बोलता है. Langkah tegap. Maju. ये यहाँ से लेके Jalan. प्रेसिडेंट के पास जाना Jalan di depan. Rival. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Langkah tegap. Maju. Jalan. Wow, that's great. Wesam, mantap. Belok kanan. Jalan. Wow. Unique style. ऐसे चलना चलना नहीं होगा लेकिन इसमें अलग वायरल वैसे ही कोई बना दिया गाँव नहीं कर रहे लेकिन चीज़ बहुत आ रही है Belok kiri. Belok. अच्छा ये दोनों का आखिरी का ये मुनासिब वाह मुझे बॉडी मारनी तरीकी इनकी मार जैसे हमारे वैसे देखिए वाह भी वाह क्या वाह अच्छा उनके से मुझे प्यारा बोल बनाया Wow. वाह ग्रेट यार Great.
creative. Dan saat ini kita saksikan bersama proses pengambilan duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi dari cawan Monas untuk dibawa ke kereta Kencana oleh Purna Paskibraka 2023, dan yang membawa bendera adalah Kacina Ozora. Ini merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian yang juga membawa teks proklamasi yang berada di belakangnya ini bernama Keila Azhara Purnama, merupakan perwakilan dari Sumatera Selatan yang juga kemudian didampingi oleh 2 ADC Presiden yang nanti ikut membawa serta mengawal proses kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kemudian diterbangkan menuju IKN Nusantara. Nusantara जाएंगे जो नई कैपिटल सिटी नहीं बनी दारुल को मुझे हम देख रहे हैं Nusantara. Prosesi kirap ini menjadi salah satu tradisi yang memang selalu dilakukan setiap menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di setiap tahunnya. Namun hanya saja jika sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya hanya dilakukan dari kawasan Monas, dari cawan Monas, tempat di mana bendera pusaka dan juga teks proklamasi disimpan hingga ke Istana Negara. Namun baru pada tahun ini proses kirap akan dilakukan lebih panjang, yakni dari kawasan cawan Monas nanti akan dibawa menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga diterbangkan menuju ke ibu kota negara Nusantara, dan akan dilakukan ataupun digunakan saat proses pengibaran bendera pada detik-detik proklamasi di 17 Agustus pada minggu depan. Pikul bang, ya follow bang. पहले बग्गी में चलते थे, आपने कहा पहले बग्गी में ही चलते थे, क्या वो जकार्ता में था, अब ये गाड़ी में जा रहे हैं, फिर आएंगे। Kacina maupun, dan kita lihat saat ini kedua paskibraka baik Kacina sang pembawa bendera dan juga Keila pembawa teks proklamasi menaiki mobil operasional taktis Maung Tangguh. Ini kemudian kendaraan taktis yang akan digunakan mengantarkan duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan melewati sejumlah jalan protokol di Jakarta.
ले लिया वाह Wow. सारे तरीके सारी फोर्सेस सारी फोर्सेस great यार क्या स्टाइल है यार great है horse riding ये शेर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है उसके बाद शॉर्ट का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है wow एक ड्राम बजा रहा है तो दूसरा सिस्टम
लाइन देखो सेम वाव वाव ब्यूटीफुल शो आलेलं शो Dan kita lihat bersama rombongan kirap duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi sebentar lagi akan meninggalkan lokasi Silang Monas dengan diiringi oleh pasukan drum band dari Akademi TNI maupun Akademi Kepolisian. Kita juga melihat tadi sejumlah barisan Gordon IPDN
Koli atau Poltekip dan juga Satpol PP pada barisan yang berjejer di sekitaran Monas untuk menunggu kirap duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi ini melewati kawasan Monas untuk menuju kawasan berikutnya. Dan sebagai informasi, pasukan pengibar bendera yang membawa ataupun bertugas membawakan duplikat bendera maupun teks proklamasi hari ini adalah dari Purna Paskibraka 2023 dengan nama Kacina Ozora, sang pembawa bendera. Ini berasal dari perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian yang membawa teks proklamasi bernama Keila Azara Purnama merupakan perwakilan dari Sumatera Selatan, dan ini kemudian menjadi prosesi kirap yang cukup berbeda dengan tahun sebelumnya karena pada kali ini kirap menggunakan kendaraan taktis MV3 Maung Tangguh produksi dari PT Pindad Bandung, merupakan produksi anak dalam negeri yang juga diperkenalkan dan turut disosialisasikan kepada masyarakat dan dipertontonkan hari ini menjadi kendaraan kirap duplikat bendera pusaka dari kawasan Silang Monas hingga Bandara Halim Perdana Kusuma nantinya. Ya, gitu nih dah lagu jauh-jauh. प्राउड है यार कि आर्मी वाली गाड़ी में बैठे होंगे और साथ वेरी वेरी Dan sebentar lagi rombongan kirap duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi akan segera meninggalkan kawasan Monas untuk menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma dengan melewati sejumlah jalur yang sudah disiapkan. Dan direncanakan nantinya akan melewati kawasan MH Tamrin Jakarta, kemudian akan melewati kawasan Bundaran HI, dilanjutkan melalui kawasan Gatot Subroto, dan juga Cawang hingga Halim Perdana Kusuma. Menurut informasi dari Polda Metro Jaya, akan dilakukan rekayasa lalu lintas pada jalur-jalur yang akan dilewati oleh rombongan kirap duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Namun polisi memastikan sistem atau rekayasa lalu lintas yang akan digunakan adalah sistem tertutup dan bersifat situasional, karena hanya ruas-ruas tertentu yang sedang dilewati saja yang kemudian nanti akan ditutup sementara. Namun untuk kawasan sebelum masih akan bisa digunakan oleh masyarakat umum. Dan juga sebagai informasi kita juga bisa melihat bersama bahwa transportasi massal Transjakarta juga masih beroperasi dengan normal, yang artinya bagi Anda yang mungkin akan melewati kawasan-kawasan di mana rute kirap ini akan berjalan hingga Halim Perdana Kusuma, ini masih bisa menggunakan bus Transjakarta untuk melewati kawasan tersebut. Dan yang cukup berbeda pula pada perayaan ataupun tradisi melakukan kirap duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi adalah kendaraan yang digunakan. Jika biasanya hanya menggunakan kereta kencana dan juga sejumlah pasukan kuda,
Ini karena jika pada tahun-tahun sebelumnya proses kirap duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini hanya dari kawasan Monas maupun cawan Monas, tempat di mana duplikat bendera maupun teks proklamasi ini disimpan, menuju ke Istana Negara untuk kemudian dilakukan proses pengibaran pada 17 Agustus. Namun yang berbeda pada tahun ini karena proses pengibaran akan dilakukan pada atau di ibu kota negara Nusantara, maka kali ini prosesi kirap ini dilakukan dengan cukup panjang begitu. Tidak hanya pada kawasan Jakarta saja, namun nanti juga akan diterbangkan dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang kemudian nanti akan juga dibawa dengan jalur darat menuju ibu kota Nusantara. Nama panjangnya siapa? Great. Great, mantap, सुंदर grand luar biasa. ये वाली मुझे बहुत अच्छा लगी और मुझे इनका व्यू और वो जो से मैंने की मदद से जो वीडियो बनाई है वीडियो भी उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है और इनकी जो सी ड्राइंग में जो सी करी जाती है वो भी बहुत प्यारी लगी है और आगे की बात आपको हम देखेंगे। गाइस वीडियो का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मुझे यकीन है कि आपको भी इस वीडियो का बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यार वाकई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की थी और इस वीडियो में इन्होंने जो लास्ट में ये गए हैं वहाँ से इन्होंने झंडा लिया और झंडा लेके आप ये नौसंतारा की तरफ जा रहे हैं और ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये जो है इस दफ़ा की जो इन्होंने जो अपनी आज़ादी अपनी मनानी है वो नौसंतारा में अपनी जो आज़ादी मनानी है और इनका ये जो इनका अंदाज़ है झंडा लेके आने का और ये बहुत ज़्यादा कमाल का है। और एक पूरी इनकी जो परेड थी वो बहुत ज़्यादा कमाल की थी और पीछे वो ड्रम बजा रहे थे और आगे आर्मी की गाड़ी जा रही थी यार, बहुत ही प्यारा व्यू था। और आप लोगों का ये अंदाज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा कमाल का और बहुत ही यूनिक है, जिसे देखकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमने इन्जॉय किया, होप कि आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।